My dear students, today we shall discuss about a new chapter, grammar chapter. This is called conditional clause. And how do we make conditional clause? We can make conditional clause using the subordinator if and unless. Unless means it is called negative if. If not is called known as unless. So this chapter is very important for you, and various questions will come including this conditional clause. Today we discuss, first of all, we know if you invite me, I will go. So this sentence is called complex sentence because if is a subordinator, and this clause is known as SC, subordinating clause, and this is MC, main clause. And also it is called a conditional clause. Why it is a conditional clause? Because the clause is joined by if. So today we discuss about the conditional clause, and we know about the 4 forms of conditional clause. 4 forms of conditional clause. So what are the 4 forms? I will tell you, discuss detail bit by bit. First, what is condition? If you invite me, एटा ला कंडीशन अप्लाई करागला. इफ यू इनवाइट मी, जदि तमे मते निमंत्रण कर, आई विल गो, मु जीबी. एटा हला दिस इज कंडीशन एंड दिस इज द रिजल्ट. इफ यू पास द बॉल, इफ यू किक द बॉल, इट रोल्स. So this is condition. If you kick the ball, this is condition. इटी कंडीशन अप्लाई करागला. जदि बॉल को तमे किक मारिबो and result is it rolls, एटा गड़िबो. So this is conditional clause. The entire part is called conditional clause. So we now discuss the 4 forms of conditional clause. What are the 4 forms? First form is present simple, if present simple and present simple. If present simple, present simple. What is if present simple and present simple? If we pour oil on water, it floats. So this is the conditional clause. And if we pour oil on water, pour is present simple form, and in the second clause, floats is the present simple form. So why these 2 clauses are in present simple form? Because it is already proved. एटा already prove is जे जदि आमे तेल को पानी रे पकेइबा ताले एटा भासीबो. ऑलरेडी प्रूव इज आ रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव हेकि अछि जे तेल को पानी रे पकेले एटा भासीबो. इफ द सन सेट्स, इट बिकम्स डार्क. इफ द सन सेट्स, इट बिकम्स डार्क. दिस इज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म सेट्स, and in this clause becomes is the present simple form. So why the 2 clauses are in present simple form? Because ये already prove हेकि अछि जे जदि सूर्य अस्त हुअंती ताहाले एटा अंधार हे जिवो. ऑलरेडी प्रूव हेकि अछि. So this is one formula. If present simple and present simple, दीटा clause present simple रे रहइबो. Number 2, if present simple, then another clause रे हमें यूज करिया modal verb shall, will, can, may. Example nova. First example is, if you read mindfully, you will get first class. You will get first class. So this is the conditional clause. If you read mindfully, here read is present simple form. You will get first class, will get, एटी modal यूज करागला will. तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला यूज करा जो ई प्रेजेंट सिंपल एंड साल विल कैन में यूज करा जीवो. आर को केस रे यूज करा जाए ना, एटा होची प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर. दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर. तार अर्थ होची जे आमे भविष्यत अनुमान करी कहूचे जे जदि तमे माइंडफुली पढ़िबो ताहले तमे फर्स्ट क्लास पाइबो. एटा भविष्यत पई आमे अनुमान करी कहले, एटा कोनोसी प्रूव नाही, किंतु फास्ट प्रूव हेकि अछि. इफ वी पोर ऑयल इन वाटर, जदि आमे तेल को पानी रे पकेइबा ढाळिबा, इट फ्लोट्स, एटा भासीबो. ये ऑलरेडी प्रूव हेकि अछि. किंतु सेकेंड फॉर्मूला रे कोनोसी प्रूव नाही. एटा होची प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर.
এইটা করি যদি পড়িব মাইন্ডফুলি তাহলে তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাইব। সো দেন উই গো টু দ থার্ড ফর্মুলা ইফ পাস্ট সিম্পল and second sentence res clause lagibo would should could might. This is the third. If past simple would could should might, second ro opposite hoji third. Second hoji present simple, third la past simple. shall lagila should basibo, will lagile would basibo, can basile could basibo. This is the third formula. Example, if I were your class teacher, I would go your home. So this is the conditional clause number 3. If I were a class teacher, here where is past simple form, then another clause re basla would basla. So ei jo system if past simple and would could should basibo, ये कौ सिस्टम रे बसिबो, कौ फॉर्मूला यूज करा जिवो, आर अर्थटा कोन, जदि मु तुमर क्लास टीचर हेई थांती ताले तम घर को मु जाई थांती. आई एम नॉट योर क्लास टीचर, आई डोंट गो टू योर हाउस और आई विल नॉट गो टू योर हाउस. मु तुमर क्लास टीचर नुहे किंतु मु तुम घर को जाई परिबेनी. दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी कंडीशन. एंड इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन. आको प्रेजेंट आंसर जण इमेजिन करूची, इम्पॉसिबल कथा को भावुची. इफ आई वर योर क्लास टीचर, जदि मु तुम क्लास टीचर हेई थांती, आई वुड गो टू योर हाउस, मु तुम घर को जाई थांती. आई एम नॉट योर क्लास टीचर, मु तुम क्लास टीचर नुहे, आई डोंट गो टू योर हाउस, मु तुम घर को जीविनी. सो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी कंडीशन. जदि गोटे क्लॉज रे इफ क्लॉज टा पास्ट सिंपल फॉर्म थिबो, सेपट क्लॉज रे वुड शुड कुड माइट यूज करा जिवो. देन अनदर इज फोर फॉर्मूला. If past simple, this is the number 4. If had plus pp, then another clause is would or could or should or might have pp. pp means past participle form. जदि गोटे क्लॉज रे had plus pp बसिबो, आउ गोटे क्लॉज रे would could should might ता पाखरे have यूज करा जिवो, then pp मेन वर्ड past participle हो. एग्जांपल, if you had come to our house, I would have gone with you. Here one example number 4. If you had come to our house, here had plus pp, had come to your house. Then second another clause is would have pp, would have gone. If we analyze the fourth formula, if had plus pp, this is called past imaginary condition. Past imaginary condition. This is called past imaginary condition. What is the past imaginary condition? You didn't come to our house. You didn't come to our house. So I didn't go with you. Go with you. तुम्हें आम घर को आसिलनी, तेणु मु तुम सागर गलिनी. तो जदि आम को इफ लगे जॉइंट करवा, सो दिस इज पास्ट इमेजिनरी कंडीशन. जने पास्ट टेंस रे बसी भाबुची, सो इफ यू हैड कम टू आवर हाउस, आई वुड हैव गॉन विथ यू. सो एई प्रकार चारिटा फॉर्मूला आमर करेक्ट फॉर्म भर आसीबो. आमे देखिबा, वी सी दैट गोटे क्लॉज को एपट देखिकी सेपट फिलअप करबा एवं सेंस नबा. जदि फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रेजेंट सिंपल, ई प्रेजेंट सिंपल, व्हिच केस यूज करा जिवो, को केस यूज करा जिवो ना, जदि सेटा आकरु प्रूव हेकि अछि. नंबर 2, इफ प्रेजेंट सिंपल, देन शाल विल मे यूज करा जिवो, एटा को केस यूज करा जिवो ना, इमेजिनरी कंडीशन. नंबर 3, इफ पास्ट सिंपल, देन सेपट क्लॉज रा यूज करबा वुड कुड शुड यूज करबा, ता पाखर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म रो वर्ब नबा, ये को केस यूज करा जिवो ना, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन. Then third is if had plus pp, would could should have might have pp, आको आम को केस यूज कर परिबा ना, पास्ट इमेजिनरी कंडीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that if the correct form verb comes in each chapter, जदि each chapter आसे ताले आम एही प्रकार फॉर्मूला अप्लाई करिकरी करिबा.